Uh, hey, hi everyone. Sorry for coming up too late. Just one of you let me know whether you can hear me or not. And so we are going to start with this amazing topic that we are about to start within few minutes. Five web development project which can upskill you. It can upskill your projects. It'll help you in upskilling your knowledge regarding the topic. So we're going to start in within 2-3 minutes, and before starting maybe we can take up a few questions and then we can start. Meanwhile you guys settle up. So if there's any kind of questions related to the topic, something which is not related to topic but related to some of technicalities related to placements of stuff, you guys can just shoot up your text and I'll shortly reply every one of you within first few minutes, and then maybe we are going to start with the topic today. All right, so yeah, for the first few minutes I'm going to just see up your text, just shoot up your questions related to the projects or related to anything related to technology, study pattern. uh, Muhammad Yasin Cloud, I didn't get you. Okay. So we are going to talk about some few web development projects. I'm going to tell you a lot of ideas, and not just five, but maybe more if I get some ideas while the live. And yeah, we are going to go about it. It is going to be a very awesome video, and I think it will help you a lot. Please stick to the end. So I started studying web development subjects. Could you suggest any book? All right. Uh, Neeraj, to be very honest, I have not seen any book. I did web development. I just practiced it. I used to do multiple projects. Even I helped my friend in his website. He has a business, so एक दूसरे के साथ collaborate करके I used to do projects. I guess that is more better way rather than seeing a textbook. For textbook, if you see the textbook rather than, I think you should see some of the YouTubers who kind of tell you how to build a good website or how to build a good project. This is how this thing helps. There are a lot of YouTubers. I guess you must be knowing more. You must be knowing more. I think Llama Dev is a very good YouTube channel from where you can learn amazing projects. So these things are going to help you. But I don't have any particular book. All right. Raspberry Pi. Okay, so Raspberry Pi is a different thing, Mohammad Yasin. I think it's related to electronics. I've made a project on Raspberry Pi. And recently, I've created a new bot, autonomous self-driving bot, in which we used Raspberry Pi for it and Arduino Uno. Okay, how to make effective projects and some project ideas. Rishabh, I'll come to your I'll come to your question. I guess that is the topic for today. Yeah, sure, Shubham. I'm going to answer this. Okay, Rohit, ठीक है, बोल देंगे hi. And where we add CSS in our project, because I know only HTML, Java, Python, but I can't learn CSS. Okay, for CSS, I think Free Code Camp has very good content. CSS I've done from Free Code Camp. They have a good playlist, so you can go and check out CSS course there. And also, I think Llama Dev has a very good content. You can go and check that out. Can you post the related video about Raspberry Pi, like you make a bot? Okay, so let me just check. Give me a second. Okay. So we use LiDAR in it. So let me just tell you the man from which. Uh, okay. Give me a second. I'll tell you in the stream. Don't worry about it. Okay, I think we have a lot of people in the live. Maybe we can start in a minute, and then we are going to start. Me. Meanwhile, I'll just tell you the person's name from where you can learn Raspberry Pi. Just a second. So we made a ROS robot actually.
We made a ROS robot in which we were doing mapping and other stuff. We were doing mapping using SLAM. We were using SLAM algorithm for mapping, simultaneous localization and mapping. So the uh, YouTuber's name is James Bruton, so you can go and check that out. So that's James Bruton from where I saw. Okay, so fine. So we build a ROS robot. Okay, coming on to the topic. Let's now come on to the topic. अब जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं. बेस्ट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं. एंड हाय एवरीवन, दिस इज नमन. आई एम अ फॉर्मर इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एंड अभी थोड़े टाइम में आई विल बी जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज एन एसडी. And along with that, I've been in this industry from past year. I've been teaching students data structures and algorithms and related stuff. So that's pretty much my introduction. And I've completed my 4th year. That's about it. So this is a very unique topic. Why? Because a lot of people just talk about data structures. A lot of people just talk about the preparation stuff, but there's one more important thing that comes in your interview. That is your projects part. Right? Project part बहुत ज़्यादा important होता है. Project is very extremely important because in an interview, the interviewer just does not see your programming skills, but he also sees whether you have implemented something, whether you have helped the community or not. And how can you help the community? By providing them services, by providing them something which is useful for them. So this is the point where projects come into play, because उसी से कंपनी वाले को पता चलेगा, उसी से इंटरव्यू को पता चलेगा कि हाउ यू आर गुड एट इट, will you benefit them or not. Because a lot of data structures and a lot of DSA is not use होती है. I'll tell you, even I have done a project जिसमें मैंने DSA यूज करी थी कंपनी में, but ज्यादा भी नहीं होता है. So they want you to see, they want you to do some kind of project जिससे उनको पता चले that you're fit for the company. So we're going to talk about that only. ठीक है. So coming on to the projects part, the web development part, हम उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं. ठीक है. Just a second. So coming on to when we talk about a project, ठीक है, जब हम इस वर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले वी रिक्वायर अ मोटिवेशन दैट वी विल हैव टू कंप्लीट इट. सो फर्स्टली पहली चीज हमेशा ये समझना है कि हाउ टू इवैल्यूएट अ गुड प्रोजेक्ट. ऑलराइट, कि एक प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट कब होता है. सो आई टेल यू, a project is a good project when it has a cause. जब हम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं and we are doing that work purposely. अब हो सकता है a lot of people like us, like you guys, we build projects so that या तो हो सकता है कि हम हमारी स्किल ठीक करना चाहते हो, either we are doing it for our skill, कि हमारा स्किल ठीक हो. सेकंड, most of us, at least I guess 80 to 90% of us, 90% of you guys must be doing it because you wanted to add it to your resume. ठीक है, हो सकता है तुम स्किल के लिए भी कर रहे हो सकता है तुम लोग रेज्यूमे पे ऐड करने के लिए भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग और समथिंग, आप फ्रीलांसिंग के लिए कर रहे हो, या फिर तुम्हें खुद का कोई स्टार्टअप वार्टअप खोलना है तब तुम उस पर कोई काम कर रहे हो. सो देयर कैन बी 4 ways, देयर कैन बी 4 reasons why you are going for a project. It can be for your skill upliftment, आप स्किल के लिए कर रहे हो. Either you can do it for your resume, either you can do it for your startup, or you're a freelancer और तुम फ्रीलांसिंग करते हो इसलिए तुम लोग क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो. सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. व्हाई? मैं तुम्हें बताता हूँ. व्हेन इट कम्स टू द स्टार्ट, व्हेन इट कम्स टू स्किल, देखो प्रोजेक्ट बनाना स्किल तुम्हारी इंक्रीज करेगा ही. सो व्हेनेवर यू वांट टू अपस्किल, when you want to increase your skill, आपको अपनी efficiency, आपको अपना काम increase करना है, please go for a project, because without doing any project you cannot upskill. I'll tell you, this was one of my failures when I was doing web development. मैं अपने web development के failures भी बताऊंगा, and then धीरे धीरे I'm going to shift to the project ideas. ठीक है. So when it comes to a project, when it comes to the skill part, the only thing that is going to help you to uplift your skill is doing a project. Without a project you can't do it. So whenever you go for web development, please try to do something, try to practice on a project जिससे तुम्हारी skills uplift हो. इसके बिना कभी चीजें क्रैम करने से, पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होती है. ठीक है. Second thing, for resume. Now if you talk about some common project, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, if you talk about a basic to do list जिसके अंदर हम सिर्फ फ्रंट एंड की बात करें, if you are talking just about front end, to do list का front end,
I don't think this is a very good project for resume. I personally don't feel it, because there are a lot of people जो अपना basic project to do list बनाते हैं, and a lot of people just do front end only. So I don't think कि ये projects include करने चाहिए. Whenever you go for a project, you should analyze the difficulty level. You should analyze the project कि ये स्टैंड आउट कर रहा है, इट इज स्टैंडिंग आउट, इट इज नॉट कॉमन. ठीक है, बिकॉज फ्रंट एंड बनाना बहुत ईजी होता है टू डू लिस्ट का. तो अगर तुम कॉमन सी चीज बनाते जाओगे, इंटरव्यूअर हैज ऑलरेडी सीन दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीपल टाइम्स, सो ही वोंट गेट एक्साइटेड आफ्टर दैट project. So make sure whenever you try to go for a project, it should be unique. Now I am going to tell you some few common projects only. मैं आपको common projects बनाऊंगा, but I assume, I hope कि तुम उसके अंदर कुछ advancement you'll do it from your end, whether in terms of UI UX, whether in terms of the database that you include, whether in terms of the work that you do, the magic elements that you add, that you can do. ठीक है, तो main purpose यही होता है. So you should evaluate that is the project good or not. After that you evaluate, you should have a good mindset to create a project. A lot of time when people go for a good project, पता है, even I talk about myself. In the start when I was doing web development, मेरे पास ना motivation नहीं होता था. I used to start, I used to end it very fast. So whenever you go for a project, please start करो और रुको मत. ठीक है, अपना जो इंटरेस्ट है ना लूज मत करो. ट्राई टू पिक अप अ प्रोजेक्ट जो आपका खुद का पर्सनल बेनिफिट हो. फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट यू लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स, if you think that you like listening songs, you like Spotify, just create a clone of Spotify. That's another web development project idea. All right, अगर तुम्हें लगता है that you love games, go for games. For example, हम बचपन में टेट्रिस खेलते थे. We used to play tic-tac-toe, we used to play snake games. Try to build that. ठीक है, so whenever you go for a project, please pick up a project that you're interested in, because this thing actually requires your interest. तो इंटरेस्ट हमेशा रखना है, इंटरेस्ट के बाहर वाली चीजें नहीं करनी है. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट पिकअप मत करो. जो इंटरेस्टिंग है, डू दैट. ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट, सेकंड जो चीज है, ठीक है, जल्दी से खत्म नहीं करना है. whenever you create a project, just think about marketing it. Make a project that you can market out to people. ठीक है, उसके लिए कैंपेन्स करो. फॉर एग्जांपल, जस्ट रेज फंड्स, डू इट. आई टेल यू, देयर आर माय फ्रेंड्स जिन्होंने स्टार्टअप के लिए अपनी वेबसाइट बनाई है. दे हैव डन सम वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड नाउ दे आर रेजिंग मनी. दे आर मार्केटिंग इट, बिकॉज व्हेन यू मार्केट थिंग्स, दैट मींस तुम उस प्रोजेक्ट को एक लाइफ दे रहे हो. यू आर गिविंग लाइफ टू दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, सो जस्ट don't think about the project for writing it on your resume. Just think of a project that you want to earn from. ठीक है, एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो जिसपे काम करने से तुम्हें बेनिफिट हो. और बेनिफिट कैसे हो सकता है? either you are selling it to the world, you're earning money through it. So market it in the best possible way. Please सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट मत किया करो, बिकॉज हो सकता है किसी दिन वो ही प्रोजेक्ट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. थर्ड थिंग, whenever you try to make up a project, mindset जो होता है ना क्रिएट करने का प्रोजेक्ट, you should always think of the project, will it get users. ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए the most important thing is whether you can sell that product to the community or not. If you can get users, if you have a good footfall, if you have good traffic over that project, है ना, होस्ट कर रहे हो अगर तुम प्रोजेक्ट को, and that project has a lot of footsteps, has a lot of traffic, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, it is like a boom. Trust me guys, interviewer तुमसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होगा. He'll be eager to talk to you because he wants to know what kind of work you have done, what kind of things you have faced while doing this, because that is the only thing that people in company, those who are actual software engineers, they face every day. So they want to know what kind of situations you've gone through, what kind of things you were thinking while making the projects. So they are interested in these kind of things. All right, तो ये चीजें हमेशा सोचनी चाहिए कि how is a project a good project. You should evaluate a good project. Second cheese, you should have a good mindset towards the project. और ये good mindset कब आएगा? When will that good mindset come? When you're making a project that is very interesting, that interests you. ठीक है, तुम्हारा मन करना चाहिए उस प्रोजेक्ट पे काम करने में.
ठीक है, तो ये पे अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करोगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, वेदर इट बी कॉमन और नॉट, बट ट्रस्ट मी, इट विल make you learn a lot of new things, whether in terms of front end, whether in terms of back end, whether in terms of any technology. ठीक है, so before going on to the actual thing, 5 web development projects, I'm not uh, I'll not be restricted with just 5. I'll tell you a lot of things. I'll tell you a lot of project ideas. मैं बहुत सारे project ideas बताऊंगा जो जो मेरे दिमाग में आते गए, and then you can shoot up. ठीक है, meanwhile let's see some of the questions for 2 or 3 minutes, and then we are going to start with, I'll just start a few questions. Bro, how to manage the essay and exams? I guess हो जाता है यार, exams are just a week thing. Actually, this is a very good thing. This is one of the project that you can make if you know DSA. If you have learned graphs, पता है graphs के अंदर चीजें होती थी, जैसे BFS GFS, ये मैं एक प्रोजेक्ट आइडिया बताने ही वाला था. सो तुम लोग ग्राफ एनालाइजर बना सकते हो, path analyzer. You can just create a path analyzer. Okay, how can a mechanical engineer enter a web development part? Bro, just start with HTML, CSS, Java. After when you have done with HTML, CSS, Java, just make a front end website and then try to learn a React से तुम लोग काफी front end का काम कर सकते हैं, and then start with the back end. Back end के लिए I'll just tell you a lot of roadmaps. मैंने काफी बार बताए हैं. This is actually about the ideas. This is not about the roadmap. You can just see my past videos on Coding Ninja's YouTube channel. Hi Ganpati, you made an Android app for young ones, whether they can get a chance to select between math level. There are MCQs. This is one of the good project. I guess this is very beautiful project, and please try to publish it. Please try to uh, po- uh, post it. Please try to share it to a lot of people so that you get a lot of footfall on the app, whatever app that you have made. And if you get good users, you're going to face a lot of problems in terms of traffic, in terms of latency, throughput, and other stuff. So just try to work on it, and it is a very beautiful project for CV, I think. Rupam, I Mern Stack full stack is good. Kotlin and Flutter, from that you can just create a app. If you talk about Android, so I think Mern Stack has a big domain for now. How much time does it take to make a good project? If you're working a lot, so I guess 4 to 5 months you can create a good project. Rat in a maze using React JS. Absolutely, yes, I'm coming to it. Don't worry. Flutter versus React Native. React Native, I guess. A lot of people uses Flutter, but I think React Native is doing a lot of things, so you can just go with React Native. But I don't have a very good distinction between them, so I think you can go with both. Okay. All right. That's okay, Ganpati. So coming on to the topic today, जो हम बात करने वाले. Uh, okay. So coming on to the topic, the first thing that you're going to do, ठीक है, सबसे पहला जो the first project that I'm going to tell you is the game. A lot of people like you, like me, even I tell about me, like I'm better at front end. I've done a lot of work in back end too in my internship, but I think I'm more good at front end because I like to play with visuals. I like things very aligned. I like creativity. So front end is a very good thing for me. So a lot of you start with front end and तुम front end से back end आते हुए अपना most of the time निकालते हो, and when it comes to back end तुम लोग ज़्यादा time नहीं निकाल पाते back end के लिए. So I think front end is okay for all of you. तो जब हम front end की बात करें, there is one important project that you're going to see everywhere. तुम किसी के भी videos देखो, either you see websites, either you go for a course. One of the most important project is a game. Why game? I'll tell you why game. पता है जब भी हम गेम बनाते हैं ना, it interests us. We have that particular interest in game. जैसे हम बचपन में खेला करते थे टिक टैक टो. We used to play snake and ladder. We used to play snake वाला गेम नहीं होता था जो phones के अंदर होता था. You go upright and there and
eat the blocks, और उससे हमारे पॉइंट्स बढ़ते थे. You can just create that using your front end. HTML, CSS, Java, React के through you can create that thing. You can create that game. वो तुम गेम बना सकते हैं, and it is going to be actually interesting, because with the front end element it depends on you. If you are a front end engineer, if you are a front end developer, तो तुम लोग उसके अंदर एडिशनल एलिमेंट ऐड कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट मैजिक एलिमेंट जो तुम जावास्क्रिप्ट के साथ ऐड करते हो, React के थ्रू तुम लोग कर सकते हो, फ्रेमवर्क के थ्रू तुम लोग कर सकते हो, बट इट इज गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज एक्चुअली बेटर देन मेकिंग अ वेबसाइट. अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कोई भी क्लोन कर लेते हैं वेबसाइट, इट इज बेटर देन नॉर्मल क्लोनिंग, बिकॉज गेम हमें इंटरेस्ट करती है. इवन फॉर गेम, अगर तुम लोग को वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, तो तुम लोग यू कैन go for C Sharp and Unity. C Sharp and Unity is also a very good thing in terms of game development. But if you talk about these kind of small games, जैसे tic tac toe हो गया, if you talk about Sudoku solver, a lot of people like me and you, तुम लोगों में से काफी लोग Sudoku solver खेलते थे. अब Sudoku solver देखो, नॉर्मल हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग में भी किया है, right? So you can also do all of these stuff using your front end, using HTML, CSS, Java, just basic things, and you can create these kind of small games. जैसे 2048 हो गया, 2048 आई एम श्योर तुम लोगों को पता होगा, और ये तुम लोग आराम से बना सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक. अगर तुम लोग बात करोगे, ठीक है, तो तुम लोग गेम डेवलप कर सकते हो यूजिंग HTML, CSS, Java. और ये काफी ज्यादा अच्छा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है जो तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, प्योर HTML, CSS, Java से तुम लोग ये बना सकते हो, एंड दिस इज वन ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट. अगर किसी को कोई भी डाउट हो बनाने के अंदर गेम्स, गेम बनाना या फिर HTML सीखना, रिसोर्सेज के बारे में मैं तुम लोगों से भी बात करूंगा. ठीक है, तो तुम लोग एक गेम्स बना सकते हो जो तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इफ यू टॉक अबाउट योर रेज्यूमे. बट अगेन, मैं तुम लोगों को एक और चीज ये बताता हूँ कि सिर्फ HTML, CSS, JavaScript से एक बेसिक सा गेम बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. विथ एवरी गेम you should involve some other thing, जैसे तुम लोग एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट स्नेक गेम, स्नेक वाला जो गेम होता है, अगर तुम स्नेक गेम की बात करोगे, तो स्नेक गेम में पता है क्या होता था, यू यूज्ड टू हैव बाउंड्रीज, यू यूज्ड टू हैव फूड फॉर द स्नेक, है ना, और तुम उसको फूड खाते थे, एंड द स्नेक की लेंथ बढ़ती थी. इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन complicate the path, you can complicate the objects. तुम लोग multiple objects रख सकते हो. You can make the game more interactive, and even at the end of the game, जब वो win that you won the game, तुम उस जगह भी काफी सारा काम कर सकते हो. So there is a lot of scope when you talk about game development using HTML, CSS, Java. तुम लोग को YouTube पे काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. I'll share some of them. मेरे को जो one of the best users लगते हैं YouTube पे, that is Llama Dev, that tells you how to create good games. वो तुम लोग को स्टार्टिंग से स्क्रैच से बताएंगे, इवन फॉर द कॉमर्स वेबसाइट्स जो हम आगे करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ठीक है. एंड इसके साथ साथ फॉर वेब डेवलपमेंट यू कैन मास्टर मल्टीपल टेक्नोलॉजी. मैं तुम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजीज भी करके बता देता हूँ जो तुम लोग को मास्टर करनी चाहिए व्हाइल यू आर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, काफी बार तुम लोगों को लाइनक्स काम आएगी. ठीक है, तो लाइनक्स तुम लोग को काफी अच्छे से आनी चाहिए. HTML, CSS, Java मोस्टली लोग कर लेते हैं. अलॉन्ग विद दैट, whenever you create a good project, तुम लोगों को उसको पब्लिश करनी चाहिए. लोग should post it, you should upload it somewhere. तो तुम लोग AWS क्लाउड सर्विसेज का यूज ले सकते हो, AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजर का यूज ले सकते हो, जहां पे तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी एप्स पब्लिश कर सकते हो. इफ यू आर पब्लिशिंग योर एप्स, इफ यू आर पोस्टिंग योर एप्स टू सम प्लेसेस, अगर तुम लोग उसको लाइव कर रहे हो, इफ यू आर लाइविंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऐप, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज तुम लोग को यूजर्स मिलेंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू क्रिएट अ गुड प्रोजेक्ट ना, मैं तुम लोग को कुछ चीजें बता दूं तुम्हारे में प्रोजेक्ट में होनी चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोजेक्ट शुड बी क्वेरी एंड फीडबैक. पता है, हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर क्वेरी फीडबैक रखा करो. व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू मार्केट योर ऐप, मार्केट योर प्रोडक्ट, मार्केट योर वेबसाइट आउट देयर, whenever you market your website out there, there are multiple users जिनको कुछ चीजों की प्रॉब्लम फेस होती है. फॉर एग्जांपल, if you talk about
इफ यू टॉक अबाउट सम रीजनल वेबसाइट, जो लोगों की वेबसाइट्स होती है, नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, उसके अंदर कभी कभी स्क्रोलिंग का इशू आ जाता है या फिर कंटेंट इज नॉट लोडिंग, ठीक है, इमेजेस शो नहीं हो रही है। तो ये जो चीज होती है ना, उनका अगर हमारे पास फीडबैक होता है ना, इफ यू हैव गुड फीडबैक, अगर तुम्हारे पास फीडबैक आता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों को क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, वेदर इट इज इशू विद सम पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल या फिर इट इज ऑन अ वाइडर स्केल, ठीक है। सो हैविंग अ फीडबैक पॉइंट, हैविंग अ फीडबैक thing in your app is a must because it is going to help your app to grow. तो ये सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो, ये सारी चीजें तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली मर्न स्टैक करते करते, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, तो तुम लोग मर्न स्टैक कर सकते हो, ठीक है। मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस, तो तुम लोग ये सारी चीजें कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मर्न स्टैक के थ्रू जब भी तुम लोग कोर्स करते हो, तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं काम करने के लिए। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी डिस्कस वाज अ गेम डेवलपमेंट। गेम बना सकते हो तुम लोग, जैसे 2048 हो गया, टेट्रिस हो गया, यू कैन टॉक अबाउट टिक टैक टो, यू कैन टॉक अबाउट सुडोकू सॉल्वर, द मल्टीपल गेम्स दैट यू कैन क्रिएट, और ये तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ द थिंग, सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग नेटफ्लिक्स खोलते हैं, हम लोग अमेजन प्राइम खोलते हैं, हम लोग प्राइम वीडियो पे जाके वीडियोस, मूवीज देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाके देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मूवी कैटलॉग। इफ यू टॉक अबाउट मूवी जॉय का भी नाम तुम लोगों ने सुना होगा, मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट बी फ्रॉम कॉलेज, तो तुम लोग मूवीज काफी ज्यादा देखते होंगे, तो तुम लोगों ने मूवीज जॉय या फिर एफ मूवीज या फिर मूवीज 123 का नाम सुना होगा। तो क्या है, पर्टिकुलर वेबसाइट है, मूवीज का कैटलॉग है, राइट। वो क्या करते हैं, किसी और का बैकएंड लेके, किसी और की एपीआई कॉल करके वहां पे हमारा मूवी का कैटलॉग शो करते हैं, ठीक है। ओपन मूवी डेटाबेस इफ यू टॉक अबाउट, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सेकंड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी अ मूवी कैटलॉग यूजिंग ओएमडीबी, ओपन मूवी डेटाबेस। ओपन मूवी का डेटाबेस तुम लोग सीधे डायरेक्टली एपीआई यूट्यूब से नहीं, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, इफ यू आर गोइंग टू राइट ओएमडीबी एपीआई, तुम लोग ओएमडीबी एपीआई खोल सकते हो, omdbapi.com, एंड तुम लोग सीधे वहां से क्या कर सकते हो, सीधे एपीआई फेच कर सकते हो, एंड उस एपीआई fetch, you can directly fetch the posters, you can directly fetch the title, you can directly fetch all the thing। अब वहां पे तुम लोग वेबसाइट पे ये भी चेक कर सकते हो, रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग कोई भी मूवी का टाइटल उधर डालते हो, फिर मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। So this is the particular open movie database website, and you can directly fetch website from here. Let me just change the layout. Okay, yeah, I think this is now working. Okay, fine. तो ये open movie database है, you can just fetch the API from here, और तुम लोग यहाँ से ये API fetch करके डेटा यहाँ से तुम लोग तो तुम लोग ये काम कर सकते हो, दिस कैन बी अ थिंग। और तुम लोग अगर यहाँ पे कोई मूवी डालोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अवेंजर्स, तुम लोग यहाँ पे सीधे उसका जेसन रिस्पॉन्स तुम लोग सीधे फेच कर सकते हो, दिस इज द रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, तुम लोग यहाँ पे सीधे बाय टाइटल यू कैन जस्ट फेच द एपीआई, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग एपीआई यूज करके यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन मूवी डेटाबेस, यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन मूवी कैटलॉग। तुम लोग नई खुद की वेबसाइट बना सकते हो दैट हैज मल्टीपल मूवीज कैटलॉग है, जैसे फोटोज लगी होती है ना नेटफ्लिक्स पे, वैसे तुम लोग एक वेबसाइट बना सकते हो दैट वर्क्स ऑन रियल टाइम, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट दैट यू कैन डू। अलॉन्ग विद दैट तुम लोग सीधे क्रिप्टो करेंसी ट्रैकर बना सकते हो, ठीक है। वो इसी सेम के अंदर आ जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रैकर में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिप्टो करेंसी की एपीआई फेच करते हैं। लेट मी शेयर दैट एज वेल, करेंसी एपीआईज। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉइन मार्केट कैप से सीधे तुम लोग फेच कर सकते हो एपीआई। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एज वेल अगेन, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली फेच एपीआई, यहाँ से एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी तुम लोगों को मिल सकती है, एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली वर्क थ्रू दिस। इस वेबसाइट से तुम लोग सीधे काम कर सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग सीधे फेच कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू गेट एपीआईज। और इसके अलावा देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, कॉइन गेको, you can use coin gecko
for their APIs as well. तुम लोग यहाँ से भी APIs ले सकते हो, and through this API fetching you can just create your own cryptocurrency tracker. और recently I created a project जिसके अंदर मैंने project के अंदर use किया था neural network, and my neural network was directly fetching the real time APIs from multiple these websites, and I was using the neural networks to predict. Neural networks are used for predicting the price. मैंने cryptocurrency price predictor बनाया था using neural networks and front end. तो मैंने neural networks के थ्रू एक मॉडल बनाया था, and through that model मैंने LSTM यूज किया था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड LSTM के थ्रू आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने डायरेक्टली रियल टाइम APIs फेच करी थी, एंड इट वाज एबल टू प्रेडिक्ट द क्रिप्टो करेंसी प्लस. मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम करता है, दैट इज एक्चुअली ट्रू. क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू योर रिस्क, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, कभी इसको देख के नहीं चलना है, बट इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट कि तुम लोग रियल टाइम डेटा फेच कर रहे हो, बिकॉज रियल टाइम डेटा फेच करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई और डेटाबेस से फेच कर रहे हो तो बैचेस में आता है, बट रियल टाइम में कभी कभी इशू आता है. तो रियल टाइम तुम लोग फेच करना सीख जाओगे इफ यू डू इट. इवन तुम लोग स्पॉटिफाई से भी कर सकते हो. यू कैन क्रिएट अ मीडिया प्लेयर और समथिंग. दिस वाज द सेकंड आइडिया दैट यू कैन डू. दिस वाज वन ऑफ द सेकंड आइडिया. तो सेकंड आइडिया क्या था हमारा? मूवीज कैटलॉग यूजिंग OMDB, ओपन मूवी डेटाबेस. वहां से तुम लोग APIs फेच कर सकते हो. सेकंड इज यू कैन क्रिएट अ क्रिप्टो करेंसी ट्रैकर या फिर शेयर मार्केट ट्रैकर. शेयर मार्केट के जो शेयर प्राइस ट्रैकर होते हैं, ये सब बना सकते हो, ठीक है. अब द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ you think that you're going to be a full stack developer, or if you think that you're a front end developer, one of the most important project is your portfolio website, ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग में से काफी लोग अगर फ्रंट एंड डेवलपर हो, इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर हो, then you should show your skills, you should show your project using a website, that yes, I've created a website for myself, and I've you can put your projects in that website कि यार ये तुम्हारी skills है, this is your ideas, this is your work, this is your internship, this is your thing. I have you can just create a normal basics of portfolio, and you can just show up your skills. You can show your skills. I'll just show you one of the portfolios which I like. If that loads fast, I'll just show you. तो तुम लोग एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसके स्टार्टिंग में यू कैन टेल दैट व्हाट हु आर यू. यू कैन जस्ट टेल योर GitHub link, you can upload your projects, and you can just create a timeline उस project के अंदर, उस website के अंदर, in that particular, and that what you have done, that you have done a developer intern, or you have been a mentor, or you have done some particular projects, कभी तुम लोगों ने क्या काम किया है. So in that particular portfolio you can just include your projects, your timeline, your education and other stuff, और तुम लोग उसके अंदर multiple projects डाल सकते हो. And this is the thing that is going to help you, because whenever you show yourself, whenever you showcase yourself as a front end developer, whenever you showcase yourself as a web developer, but the सामने वाला interviewer will ask that what works you've done, and he'll ask that in a very um, uh, a very good way, in a very innovative way. और वो तुम innovative way कैसे show कर सकते हो? You can just show a good website. If you know Greta Thunberg की कभी website जाके check करना, it is a very beautiful website. That is a kind of portfolio for the works that she has done. ठीक है. So in the same way, you can just create a very good website that is telling your talent, because this is going to be a very important website for you guys, because since you are a web developer, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा important focus होना चाहिए कि तुम्हारा खुद का portfolio कैसा है, ठीक है. So this is one of a good project that you can create a good portfolio for yourself, और ये सारा तुम लोग काम कर सकते हो. This was the third thing. Fourth important thing is, हम लोग काफी ज्यादा हमारे आसपास क्या होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं. Now for business, one of the most important thing is that are you able to attract people online? ठीक है. If you talk about Amazon, if you talk about Flipkart, if you talk about any other for example, if I talk about clothing industry, if I talk about clothing brands, if I talk about Bonkers, if I talk about Nike, if I talk about Adidas,
they have their own website in which they sell their products, right? That is a e-commerce website. So there are multiple use cases of e-commerce websites. The e-commerce websites helps you boost your business. The best way to do is, how I did is, मैंने क्या किया था, I have a friend जिसको एक website की जरूरत थी. I created a website for him in term in return of some money. So this can be a paid work for you guys as well. तुम लोग ये देखो कि तुम्हारे आसपास is there anyone who requires a website, is there anyone जिसको कोई वेबसाइट बनवानी है, देखो वेबसाइट उनके लिए बना दो. इट इज अ वेरी इजी टास्क. अगर तुम्हें नहीं आता, यू कैन चेक मल्टीपल वीडियोस. बहुत सारे वीडियोस है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के. ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन यूट्यूब. तुम लोग किसी के में भी चेक कर सकते हो. फ्री कोड कैंप भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है. तो फ्री कोड कैंप का एक कोर्स है इन विच दे आर टेलिंग यू हाउ टू बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट. सो यू कैन गो देयर. वहां पे तुम लोग को काफी ज्यादा अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, राइट फ्रॉम द बेसिक, जहाँ पे तुम लोग बेसिक फाइल्स बनाते हो टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो यू कैन जस्ट डू इट. और तुम लोग ये सारी चीजें काफी कर सकते हो. एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम्हें ये भी नहीं लगता है, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन क्लोन द प्रोजेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लोन Amazon, यू कैन क्लोन फ्लिपकार्ट. तुम लोग अगर तुम्हारे मन में कोई नया आइडिया नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडिया, फॉर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लोन अ प्री एग्जिस्टिंग ऐप, you can clone a pre-existing website. And a lot of people do. Even in the start when I used to do some project, मैं clone करता था, क्योंकि यार हमारे को हर चीज तो नहीं पता थी. And the best thing about best thing about e-commerce is that ये जो चीज है e-commerce website है, it is going to include both front end as well as back end. तो फ्रंट एंड और बैक एंड जब इंक्लूड जाता है ना, तुम्हारी को काफी सारी चीजें सीखनी पड़ जाती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, in terms of scalability, because e-commerce websites है, there can be huge traffic. For example, Sunday है, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं खरीदने के. A lot of people want to buy things. For example, it is a very good clothing brand. A lot of people is going to buy you if people have trust in you. So multiple, तुम लोगों को काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, and you're going to learn a lot of things in terms of backend, because scalability is going to be issue, traffic is going to be issue, resources is going to be issue. And whenever you make such kind of project, please include a good backend. Please include AWS to host your services, to take more power from the system. You can use AWS, you can use GCP, you can use Microsoft Azure for resources. इन चीजों से तुम्हारा काफी ज्यादा हेल्प होगा, बिकॉज व्हेनेवर यू गोइंग इनटू कंपनी, हम लोग बैक एंड यूज कर रहे होते हैं, हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं, वी यूज हाई कंप्यूटेशनल पावर इन टर्म्स ऑफ Azure, इन टर्म्स ऑफ GCP, इन टर्म्स ऑफ AWS. अगर तुम लोग को ये टेक्नोलॉजी आती है, तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा. यू कैन I mean, after doing a good project, हमारी front end plus back end skills, even a more important thing, your decision making skills, तुम्हारी decision making skills काफी ज्यादा सही होंगी, तो तुम लोग ये प्रोजेक्ट बना सकते हो. यू कैन क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, तो ये कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे ई कॉमर्स वेबसाइट. और एक और चीज तुम लोग बना सकते हो अब सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आजकल LGBT कम्युनिटी का भी काफी ज्यादा चलता है, तो तुम लोग LGBT कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हो. कैन क्रिएट अवेयरनेस फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर माइनॉरिटीज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड. और ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू हेल्प इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आजकल इन सब चीजों से अफेक्टेड हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस कैन डाइवर्ट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन योर ऐप. सो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द करंट सोसाइटल नीड. लाइक फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट a good website for depression, anxiety issues as well, in which people can contact each other. You can you can create a peer-to-peer network to help people out there. So ये जो societal benefits की होगी, this is also very good projects, because it involves your mind, it involves your uniqueness. क्योंकि किसी भी project पे काम करने के लिए there is one more important thing, that project idea should be unique. And if you build a project for societal needs, if you do something for society is going to recognize you. So society is going to recognize you, and there can be a huge flush of people, huge flush of users. So यहाँ से, because there are a lot of societal issues going out there, तो तुम्हारा traffic भी बहुत ज्यादा आएगा. There are going to be multiple users. You're creating a peer-to-peer network, जिसकी वजह से तुम लोग को back end involve करना पड़ेगा. It is going to be a very good project. It is going to be a very beautiful project, जो तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है. तो ये कुछ आइडिया से यू कैन क्रिएट अ गेम, यू कैन क्लोन अ वेबसाइट, यू कैन क्रिएट योर ओन मूवी कैटलॉग, यू कैन क्रिएट अ सॉन्ग कैटलॉग using Spotify API, you can create a cryptocurrency predictor.
not predictor but cryptocurrency tracker, in which they are telling you the real time cryptocurrency rates that you can do. Along with that, you can just clone something, you can just make a website for societal benefits. तुम लोग game बना सकते हो. So there are multiple projects out there, but please make sure that whenever you choose a project, whenever you go for a project, it should be unique. It should have unique. It should tell that you've done some work. पता है तुम्हारा USP होना चाहिए तुम्हारा project. If you're creating a project, उस project में छाप होनी चाहिए कि यार ये काम मैंने किया, ये काम इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर ये चीज है और ये चीज बाहर के किसी project में नहीं है. ठीक है, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है. लेट्स टेक अप सम फ्यू क्वेश्चंस एंड देन थोड़ा और बात करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड. ओके, so I've already learned HTML, CSS, and a little bit JavaScript, but I can't find myself confident in it. What's the best way to learn JavaScript? For JavaScript, I think you can just practice in the Google debugger. तुम्हारे Chrome के debugger में तुम लोग you can practice JavaScript, but again JavaScript की ऐसे practice नहीं होती है. You will have to take up a project. एक project ले लो. You can just take up an easy project and try to work on it. एक easy project, just don't go for a very high-end project. Take a normal game project, normal basics. For example, you can just pick up a tic-tac-toe and try to involve, try to inculcate some beautiful, some important things. YouTube, check and just think what all things that you can add in that particular game, and this is how you can just learn JavaScript. JavaScript को तुम लोग ऐसे normal coding करके practice नहीं कर सकते. You'll have to take up a project. Okay. Versus game development versus learning some programming. And nowadays, can you tell which is benefit? Okay, which can benefit you guys? So I think everything can benefit you because I think all of them are of different domain. If you talk about programming knowledge is must for whether you go for game, for app, for web. So programming level, programming, I don't think this is the perfect place to put in. Programming fundamentals you should always know. Whether if you talk about OOPS, if you talk about database, if you talk about computer networks, if you talk about operating systems, you should have a good knowledge about it because in the company they can ask you for it. But when it comes to game development, app development, web development, I think web development is better because firstly it is easy. ठीक है, web development is easy because आप लोग HTML, CSS, Java, it is a thing of 10th class, 11th class. So I think web development is a easy thing to go. And when it comes to projects, web development has a lot of domain. So web development, I think, is a better option and it is going to benefit you. At least um, people wants web development, I think, more. Okay. Sir, I'm in fifth sem and in sixth sem companies are coming. Which projects can I do in these 6 months to add in CV? Bro, you can create an e-commerce website or even you can create your own movie catalog. I think if you love Netflix, then you can directly clone Netflix. While cloning, whenever I talk about cloning, जब भी तुम लोग किसी का cloning video देखते हो, make sure that whatever things they are telling you, if you talk about any service providers, if they talk about any particular framework, if they talk about any particular thing, if they talk about uh, message queues or something related to that, please try to focus on that. You should be good at it because whenever you will go in an interview, he can ask you anything regarding that particular app, whatever you're making. So you make sure that you're good at it. तो जो भी मैंने तुम लोग को पास तरीके के प्रोजेक्ट बताया, you can do it in 6 months. 6 month तो काफी ज्यादा है. So just go for anything, but it should be very good enough कि उसमें पता लगे कि हाँ यार 6 महीने बंदे ने काम किया है. Sir, is 4 to 5 month good to crack off campus companies like Google, Microsoft, Amazon? Bro, this is yeah, I mean, I will not say no, I will not say yes, but because it depends on your practice. If you're going to practice straight away for 4 to 5 months regularly on an everyday basis, giving good hours, definitely you can crack Google, Microsoft, Amazon.
But I think there's no particular number to crack these kind of companies. If you're good at it, even you can crack it in 3-4 months, or it can take you up to 7-8 months. But it depends on you personally, that how much good you are at it and how much time you're investing in it. So 4-5 month में अगर तुम लोग रेगुलर कर रहे हो, yes you can crack off campus companies, but make sure that तुम लोग सिर्फ programming नहीं कर रहे हो. You should be good at skills like OS, DBMS, computer networks, and other stuff. You should be good at programming, as well as you should have a good projects. You should have a good project, at least one project, one good project. Is there any pay after placement program for DSA? Shavasti, I didn't get you. Please clarify the question. Okay. Uh, there was one question. Let me just go to it. Okay. Yeah, PHP is a very good thing. So you have an internship in PHP, because I'll tell you, whenever you go for cyber security, जब भी हम hacking की बात करते हैं, a lot of hackers, what they do is they kind of create, they kind of find things, they find loopholes. And अगर तुम वो loopholes की बात कर रहे होगे, तो तुम लोग वो PHP सीख के वो तुम loopholes को verify, उसके अंदर काम कर सकते हो. So if you talk about cyber security side, you can actually go from PHP. तुम लोग डिफेंस के अंदर जा सकते हो. It's hard to manage DSA and dev simultaneously. Okay, very beautiful question by Anuj. It is hard to manage DSA and dev simultaneously. Can you suggest how to manage? Okay, so I have two important perspective to it. मेरे दोनों perspective सुन लेना. So first perspective is, if you're good at DSA. So if you're good at DSA, the perspective of mine is that please take up a good project, invest as much time as you can in that project, और 2 घंटे सिर्फ कॉन्टेस्ट दे दिया करो, and on code forces, on code studio, on wherever that you want to, wherever you like, just give 2 hour course whenever there is 2 hours test, whenever there is a test, whenever there is contest. If you're good at DSA, if you're good at programming. If you're not good at programming, then what you'll have to do is, पहले प्रोग्रामिंग अच्छी कर लो, वेब डेवलपमेंट छोड़ दो. जस्ट लीव वेब डेवलपमेंट, छोड़ दो वेब डेवलपमेंट. एट द पॉइंट जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारी प्रोग्रामिंग अब अच्छी होगी, अब क्या करना है, तुमने डेवलपमेंट पे कब कर लेनी है और सिर्फ कॉन्टेस्ट देने हैं, जो मैंने अभी बताया. डीएसए अगर अच्छा हो तो, अगर तुम्हारा डीएसए अच्छा है, प्लीज वेब डेवलपमेंट पे फोकस करो या फिर प्रोजेक्ट पे फोकस करो, एंड सिर्फ कॉन्टेस्ट पे फोकस कर दिया करो. कॉन्टेस्ट दे देना हमने, कॉन्टेस्ट के अलावा नहीं पढ़ना है, बाकी टाइम प्रोजेक्ट. इफ यू आर नॉट गुड एट इट, प्लीज प्रोग्रामिंग कर लो बिना सोचे समझे. वेब डेवलपमेंट थोड़े दिन रोक दो. द डे यू थिंक कि यार अब प्रोग्रामिंग सही हो गई, अब क्वेश्चन आ जाए, हो जाएगा, उस टाइम वेब डेवलपमेंट पिकअप करो एंड सिर्फ कॉन्टेस्ट दो. सो अगर तुम्हें ये समझ आ जाए तो प्लीज फॉलो दिस, एंड दिस इज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. Can I make a website providing free movies that is legal to do so? I think not, but yeah, at least you can provide it to some user. At least you have a good thing ki you have created it. It'll be good for resume at least. Just don't take a patent to it that it is your particular website. So don't do that thing. Okay. Do I have to do one more web development project when I have one full stack project where I have rolled in backend and do practice mode? Actually, just don't take up a good project now. If you have a good project, if you have done a good project which is a full stack project and you have done work in backend, I'm sure अगर तुमने backend पे काम किया तो front end तुम्हें आते ही होगा. So don't go for a new project. Instead, try to practice DSA. ठीक है. Farhan, you can go for a course. Just try to start with the course. तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज. तो प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ. सो प्रोजेक्ट आइडियाज, ऑलवेज व्हेन यू टेक अ गुड प्रोजेक्ट, प्लीज प्रोजेक्ट के हिसाब से हमेशा हमें ये भी सोचना है कि वेदर दैट प्रोजेक्ट इज अ गुड प्रोजेक्ट और नॉट. कभी भी प्रोजेक्ट लेते हो, वॉट एवर प्रोजेक्ट दैट यू चूज, मैंने तुम लोगों को अभी जितने प्रोजेक्ट्स बताए, प्लीज टेक अप द प्रोजेक्ट एंड थिंक व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन ऐड टू इट.
Just for example, if we talk about 2048 game, a lot of people have implemented it. ठीक है, a lot of people have implemented it already because it is a common game. But think about what things that you can do, or you can change some kind of logic. You can just say change some kind of JavaScript logic. You can add UI element. You can add some kind of magic elements to it. कुछ तुम लोग interface change कर सकते हो. So just think about it. How can you make it a beautiful app? Even if you cannot change the logic, just think about it. How can you make it look more beautiful, make it run quicker, make it run faster? This is the kind of thing that you can do. So even if you're not building a wholly new project, you can just create a new project and you can enhance the working. अगर तुम ये भी चीजें कर लेते हो, if you think something unique, so it is a plus point of view. Every project that you choose should be unique, or unique होना चाहिए, unique in terms of anything with the framework that you do, the kind of business logic that you use. It should have a good business logic. ठीक है, अगर तुम लोग इन सारी चीजों के बारे में काम करोगे, डेफिनेटली योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टैंड आउट, यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल यूजर्स. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. पता है, किसी प्रोजेक्ट को कभी इस तरीके से मत करना कि यार दिस इज जस्ट फॉर रिज्यूमे. ऑलराइट, व्हेन यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, जस्ट think of something, think of the innovations कि तुम लोग ये project क्यों कर रहे हो. Just think of a project that is going to benefit you. For example, I have a lot of interest in clothes and shoes. I have a lot of interest in sneaker culture. I have a lot of interest in Jordans and all stuff. So um, in a few months, I'm going to create a website. So this is my idea. I'm not building something else. Why should I do something else? When I have my idea, when I have interest in something, I'll make a project on my own regarding that business. तो हमेशा ये चीज सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम लोग को हेल्प कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर डैड डज अ बिजनेस, तुम्हारे पापा का कोई बिजनेस है, जस्ट ट्राई टू मेक अ गुड वेबसाइट फॉर हिम. दिस इज हाउ तुम लोग काम भी कर रहे हो. इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, और तुम इसको होस्ट भी कर पाओगे. हो सकता है कि अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, तुम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना लोगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू होस्ट इट. पता है, होस्ट नहीं करे तुम्हारा फायदा क्या, तुम्हारा लॉस कहाँ हो रहा है, दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ. स्किल तुम्हारी अच्छी हुई, दैट्स अदर थिंग, बट तुम्हारा टाइम इसलिए वेस्ट हुआ बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनी मनी. उस चीज का कोई यूएसपी नहीं. ठीक है, इट वाज जस्ट फॉर योर रिज्यूमे. तुमने बनाया, लिखा, खत्म. सो इंस्टेड ट्राई टू थिंक ऑफ अ नेसेसिटी कि यार कहाँ पे जरूरत है इस चीज की, कहाँ पे मैं ये चीज कर सकता हूँ जहां से मुझे प्रोडक्शन वाला फायदा हुए. So this is what I'm on to. I'm soon going to make up my own website of clothes and shoes, in which I'm going to sell my own clothes. I have a lot of interest in fashion technology as well, so I'll be making a website of my own, showcasing all my designs. So this is my motivation, और मैं इसमें मेरा time waste नहीं. Why? Because I am learning some new skills, as well as this is going to help me in my business. तो ऐसी चीजों पे काम करना है that is going to help you, not just for your resume. And whenever you build an app, whenever you host something, try to include the link in the resume itself. Because if you're going to include the link in the resume itself, या तुम्हारा इंटरव्यूअर ये सोचेगा यार इस बंदे ने बनाया है, and he's telling us कि यार ये proof है कि हमने host करी है. And with this point, whenever you're hosting it, he's going to have a different domain of questions. वो तुम्हारा जो shift है ना, वो इंटरव्यूअर का यहाँ से इधर हो जाएगा. क्यों? Why? Because whenever you put up a website, whenever you put up a link to your resume, उसको पता है कि यार तुम लोग confident और host कर रहे हो इसको. And whenever you host things, उसको पता है कौन कौन से situations है आने वाली, in terms of latency, in terms of throughput, in terms of database, because you have minimal database, API fetching में problem होगी, resiliency issues होंगे, तुम्हारा का जो business logic होगा हो सकता है वो इतना अच्छा नहीं हो. So there can be multiple things. He is going to ask you what kind of work you have done, and वो all together एक नया discussion होगा. और जब ये discussion change होगा ना, अब इंटरव्यूअर को क्या आएगा मजा, बिकॉज नाउ ही इज टॉकिंग टू समवन who is actually in the industry, who's actually providing something to the society, who's doing work. क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो लिंक है, इसने उसको प्रमाण दे दिया कि हाँ यस इस बंदे ने काम किया. सो जस्ट मेक श्योर दैट योर प्रोजेक्ट शुड बी यूनिक. यू शुड take up full responsibility of your project. It should have a purpose. You should never fake the project, or please make a project that gets users.
just say someone, I guess Ganpati, that was the name. He created an app for children. He created an Android app for children in which he can select, the children can select the multiple levels and they can work accordingly. They can take up a quiz, they can learn something new. So this is a thing that you can provide to the society, और यहाँ से तुम लोग को users मिलेंगे, because आजकल छोटे जो बच्चे होते हैं they are a lot attracted towards phone. तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू गेन यूजर्स. तो तुम लोग एक क्विज ऐप बना सकते हो. अब ये चीज सोचो, ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज होने चाहिए व्हेनेवर यू वर्क. सो दीज आर सम टिपिकल प्रोजेक्ट आइडियाज. एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एल्स वी आर गोइंग टू कॉल ऑफ. V3 YT creators, please, if you don't have a laptop, please take up a laptop because it is going to be very necessary. Bro, 1 month later, I'm in third year. I have not done even basic level of DSA. So shall I? Oh, okay. So please, Gopal, please don't start with web development now, because web development requires some programming fundamentals. So programming fundamentals, for example, it will require you to run for loops, while loops. तो ये जो business logics होते हैं, जो loop conditions होती हैं, if else conditions होती है, that you cannot understand without doing programming, without doing DSA. So please don't go for web development. Please start with DSA right now, right away. Take up a course and then do it. But yeah, I'm in second year, fourth sem. I'm currently doing code forces, and now I'm doing lead code, code studio, code forces. When do I start learn development? Hi Lakshman, if you're in fourth sem and you're currently doing code forces, that means you're good at. That means तुम लोग एक intermediate level पे तो आ ही गए होंगे. If you're doing code forces, so what do I think is this is the perfect time to start development. Please development start कर दो. Along with development, give 2 hours for the contest, या फिर दिन का 2 घंटा बांध दो in which you're just studying programming. Rest of the time, please start development, because having a good project is very important. तो एक अच्छा project के लिए please do it right now. Start with the web development and then go for contest and code studio. Okay. So can we do like this? Spend 2 months in learning the concepts of data structure and after 2 months start coding. Can we do like this? I didn't get you coding or data structures. What I say you is, अगर तुम लोग को, if a lot of people from you must be in their start, in their beginner phase. So firstly, the best the best advice that I can give you is, rather than focusing on web development, please focus on your data structures. Please focus on your कोडिंग फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. और जब तुम्हारे फंडामेंटल्स ठीक हो जाए, उसके बाद शिफ्ट करो वेब डेवलपमेंट में. वेब डेवलपमेंट में पहले मत घुसो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज कंडीशनल्स होते हैं, देयर आर लूप्स, देयर आर पैटर्न्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो तुम्हें फंडामेंटल्स के बिना समझ नहीं आएंगी. एंड इफ तुम्हारा फंडामेंटल्स क्लियर है, देन ओनली इफ यू आर वेरी गुड एट कोडिंग, एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग यू ओके अगर तुम्हारा ठीक हो, दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए, दैट यू कैन डू इट, देन स्टार्ट वेब डेवलपमेंट. देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल. मैंने अपना वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट किया था व्हेन आई डिड 300 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड. ठीक है. So after doing 300 questions on lead code, then after I started competitive programming and web development. So before that I didn't do it. So I'll also tell you the same way. Please pehle DSA strong kar lo, after that do it. Absolutely. If you have good knowledge in front end developer, then you can go for back end developer. I don't think इसके अंदर कोई इशू है. आसानी से जा सकते हो, बहुत ईजी है. बट तुम्हारा अगर थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर है, if you know what is internet, if you know everything, then you can go for it. I don't think कि इतना ज़्यादा हार्ड होने वाला है. Okay, let's see some other questions. Like learning the concepts, making notes, learning and then later starting coding. नहीं, प्लीज ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग नोट शुड बी साइमल्टेनियस. कभी ऐसे अलग अलग मत करना. इट इज रियली गोइंग टू hit you a lot.
बिकॉज ये आई टेल यू, पता है ये जो चीज तुम कह रहे हो ना, दिस इज अ टाइम वेस्ट एक्चुअली. तो नेवर waste your time in doing these stuff, please. rather than wasting your time, try to invest your time. तो कभी ये सारी चीजें मत करना. जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो उसी टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है. एंड समवन वाज टॉकिंग अबाउट बैकएंड. तो बैकएंड में तुम्हें अगर बेसिक फ्रंट एंड नॉलेज है, फॉर एग्जांपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट अगर तुम्हें पता है एंड यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद ओएस एंड सम जनरल नॉलेज, एंड देन यू कैन गो फॉर डेटाबेस. एंड डेटाबेस के लिए, फॉर बैकएंड डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज learn one relational database and one NoSQL database. So there are two types: SQL database and non-SQL database. NoSQL database, you should know what kind of database that you want to go for depending upon the use case. तो अगर नो सीक्वल डेटाबेस के लिए जाते हो तो आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोंगोडीबी, बिकॉज तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर स्कीमा नहीं होता. सो या एक्चुअली मर्न स्टैक. हाँ, तो इन बैकएंड डेवलपर या यू कैन गो विद मर्न स्टैक. मर्न स्टैक नहीं, आई थिंक मर्न स्टैक इज बेटर देन जावा विद स्प्रिंग बूट. आजकल जो शिफ्ट हुआ दैट इज मर्न स्टैक. So you can just learn Monstack, but please SQL पढ़ लेना. SQL is very important. Relational databases के बारे में information बहुत ज़्यादा important होती है. ये सारी चीज़ें please पढ़ लेना if you're going for backend. I'm at third year. Thanks, Nanu. I'm at third year. What should I do? Web development or data structures? If data structures, then which language is the best? Uh, Bro, if you want to go for uh, competitive programming and other stuff, and just for the language, I think for my I personally feel C++ is a better option. There are multiple reasons. I told it yesterday on the live with Karan. Yesterday I had a live with Karan. मैंने बताया था how to choose a good language. So if you want to go for competitive programming and just you want to learn something good, so C++ is better because इसके अंदर pointers भी होते हैं जो तुमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं. If you talk about AI, if you have interest in AI ML, then you should go for Python, and if you have interest in web technologies, तो Java. But I think C++ अगर तुम्हें आती है तो तुम लोग C++ से Java 10-15 दिन में शिफ्ट कर सकते हो. So from my position, I think I should say C++ is a better option. A very good question, and I was not at all expecting this. Thanks, Pidada. Um, I assume I pronounced your name correctly, but pardon if I was wrong. So, how to explain a project in an interview? So, I'll tell you steps to explain the project. So, when it comes to a project, the first thing is, what does a project do and why this particular project? Like, what was the reason, what was the motivation that you choose the project? After, when you tell the motivation of the project, then you're going to tell the technologies that you worked on, the technologies that you worked on, and then you're going to explain the whole business logic of your project, that this is what you did. ठीक है. सबसे पहले तुम्हें बताना है why this project, the technology that you used, please mark it, ये steps लिख लेना. Why did you choose the project? The motivation, the technologies that you used, what kind of work that you did, then your business logic in which you helped. Third is your user bifurcation. Why a user bifurcation? So that the interviewer gets to know about whether it is a real-time project, whether it was just a project for the resume. अगर तुम्हारे पास कुछ user base है that someone has worked on it, तो वो कि क्या क्या what was the user bifurcation. Next step is कि तुम्हें ये बताना है कि what are the problems that you face. For example, traffic issues, for example, latency issues, for example, resources तुम्हारे पास कम थे, computational power to run your business logic was not enough. So these kind of problems that you should discuss, and your scope of improvement. अगर तुम्हें 6 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास होगा, आई थिंक योर प्रोजेक्ट्स पार्ट विल सफाइस एंड ही इज गोइंग टू एक्चुअली हायर यू, बिकॉज तुम्हारे पास इन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है कि व्हाई डिड यू चूज द प्रोजेक्ट, व्हाट टेक्नोलॉजीज दैट यू वर्कड ऑन, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज योर बिजनेस लॉजिक, द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड, ठीक है, and the user bifurcation that you worked on, ki haan, whether you have posted it to the outer society or not. Yes, Meghraj, you can become a full stack developer. My intern is in 50 days, did DSA course and completed. Bro, please practice, Joshit. Please practice it. Please. This is the time for you to practice DSA. Do at least 10 to 15 questions a day for getting a good thing. Yes, Meghnad, you can become a full stack developer. So that was
all from my side regarding the ideas regarding the web development projects, like how you should choose a project, what kind of things you should include. Please, इवन इफ यू क्लोन अ प्रोजेक्ट, इट शुड बी यूनिक इन सम वे. ऐसा नहीं कि किसी प्रोजेक्ट उठा के ही तुमने अपने रिज्यूमे में लिख दिया. प्लीज ट्राई टू ऐड लिंक्स टू योर प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे, बिकॉज it it tells that yes, you have done the project and you're firm about it, you are confident about it, that's why you have put the link. तो ये सारी चीजें, इन सब के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है. यू शुड हैव अ गुड प्रोजेक्ट, इट शुड बी यूनिक, इट शुड हैव यूजर्स टू इट. अगर तुम लोग इसको पोस्ट करोगे ना, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर 10 times. ये तुम्हारी जो हायरिंग की चांसेस है ना, उसको 10 times ग्रो कर देगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री. पता है, कभी सिर्फ एक नॉर्मल सिस्टम पे काम कर रहे हैं और एक दुनिया के साथ काम कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो इफ यू अपलोड योर प्रोजेक्ट, इफ यू post your project to people, if you share your project to people, that means you're working in the industry, that you're working for the people, you're working for the society needs, you're working. So ये जो चीजें तुम्हारे जो chances of hiring it 10 times बढ़ा देंगे. So please make sure that you include backend as well as you think about the users, whether your users are going to add it, whether your users are going to install it, whether your users are going to use it or not. So make sure that you create such kind of app that is going to benefit people. ये सारी चीजें बनाओ, यूजर्स को हेल्प करो, एंड इन सब चीजों के बारे में सोचिए. डेफिनेटली योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम एंड यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या टेक्नोलॉजीज के बारे में तुम बात करो. यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. बेस्ट 5 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंने शायद 5 से तो ज्यादा बताई दिए, बट अगेन ये सारे इंटर रिलेटेड है, इन विच यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. Decision making, UI UX, front end, back end, there are multiple stuff and it is going to be a very good journey. ठीक है. And thanks to Pidada who asked a very good question, how to explain a project. तो ये सारी चीजों के बारे में सोचो. Yes, Cyrus, decentralized voting system is a good project idea. ठीक है, तो ये एक कुछ काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग लाइव, थैंक्स फॉर सीइंग इट टू द एंड, एंड मेक श्योर दैट यू डू अ गुड प्रोजेक्ट. एंड इफ देयर समथिंग दैट यू डिडंट लाइक अबाउट द सेशन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेल मी. मेरे को भी फीडबैक चाहिए होता है टू इंक्रीज, टू बी गुड एट दिस थिंग, और मैं उस फीडबैक को नेक्स्ट टाइम inculcate करने की कोशिश करूंगा. So if you want to say something, please you can write in the live chat itself. I'll be here for 2 minutes. Else you can just drop a comment down below in the session. And please, if you have not yet subscribed to the channel, please live को at least like कर दो अगर तुम्हें पसंद आए. Please please hit the like button. Yeah, and if you're not yet subscribed to the channel, please subscribe to the channel, because हम लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हैं. We are making videos for you guys. For that, ऑनेस्ट जो ओपिनियंस है, ऑनेस्ट चीजें हैं जो हमारे मन में होती है, वो वापस से आए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अस, दिस इज फॉर सेक ऑफ यू गाइस. ठीक है, तो that's all from my side. Thank you guys, and if you have any comments for me, you can just write in the live chat or you can just tell me. Thank you, Cyrus, that means a lot. So with that, I think I should end it, and please take care, study well, keep programming, keep studying. And I wish best of luck to all of you, and I hope you all will reach to your dream companies with good projects, with good resumes itself. So thank you guys. Have a nice day.